Hello everyone, Namaskar दोस्तों. My name is Pulkit Singh and this year I have secured All India Rank 26 in the Civil Services Examination. ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था. इससे पहले मैंने 2 अटैम्प्ट और दिए थे. उन दोनों अटैम्प्ट में I'll connect my strategy with respect to what I had done in my earlier attempts. जैसे पहले अटैम्प्ट में मैंने 2017 के अटैम्प्ट में like if we talk about the entire structure, यहाँ पर हमारे को मोटा मोटा we have to read about our GS subjects, general studies and our optional subject. तो जो मेरा 2017 का अटैम्प्ट था उसमें I was doing fair enough well. मैं काफ़ी अच्छा करा था मैंने अपने ऑप्शनल के एग्ज़ाम में, बट somehow I lacked few points in my general studies एग्ज़ाम. फिर 2018 के एग्ज़ाम में इसका ठीक उल्टा हुआ, जहाँ पर I was able to do well, cover some of my aspects in the general studies paper, but I could not focus on my optional paper. तो इस तरीके से I was having this experience कि जहाँ पर I was not able to balance these things. तो 2017 में मैंने एक तरीके से I had overemphasis on my optional, and in 2018 I had overemphasis on my general studies, and as a result of which I could not balance the need of the mains exam. तो इस बार जो मेरी स्ट्रेटेजी थी, इट वाज रूटेड इन टर्म्स ऑफ बैलेंसिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द जनरल स्टडीज़ पेपर एंड माय ऑप्शनल सब्जेक्ट. तो इस बैलेंस के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ सो दैट आई कम टू एन एवरेज लेवल इन ऑल दिस टॉपिक्स. चाहे जनरल स्टडीज़ हो, चाहे एसे हो, चाहे मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट हो. तो मैंने सबसे पहले प्रिपरेशन इस तरीके से ओरिएंट करी कि आई विल फर्स्ट टेक माई सेल्फ टू अ लेवल जहाँ पर मैं कहीं ना कहीं एक एवरेज मार्क्स स्कोर करने में कैपेबल हो जाऊँ. तो इसके लिए मैंने जो स्टैंडर्ड रिसोर्सेज थे उनको रेफ़र किया. लाइक इफ़ आई टेल यू पेपर वाइज, in this for paper 1 for history I referred our NCERT and Wajiram yellow book as well as the prelims note that I had made for art and culture. तो ये मेरे एक बेस नोट्स थे. Then for modern history I referred Spectrum and शेखर बंदोपाध्याय for additional reading. और वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने किया था अर्जुन देव और विजन IAS के वैल्यू एडिशन मटेरियल से. दिस वॉज माई बेस मटीरियल, मीन्स ये मेरा पहला इनिशियल रीडिंग मटीरियल था जिसको मैं यूज़ कर रहा था अपने कहीं ना कहीं एक डिफ़ॉल्ट लेवल पर रीच करने के लिए, सो दैट आई एम एबल टू रीच टू अ लेवल कि जहाँ पर मैं कम से कम एक एवरेज स्कोर तो मैं करूँ उस पर्टिकुलर टॉपिक में. देन सिमिलरली फॉर जोग्राफी आई रेफर्ड PMF IS एंड इसमें मैंने फोकस करा था स्पेशली ऑन इट्स डायग्राम्स. देन फॉर सोसाइटी पार्ट आई रेफर्ड अगेन विजन IAS value addition material and it was quite comprehensive, and as well as if I talk in terms of paper 1, your society is the part जहाँ पर आपको कहीं ना कहीं cost benefit ratio is very favorable for you. Then talking about paper 2 में for polity I had referred Lakshmikant, and secondly Shubhra Ranjan IAS question answer format that they give for the paper 2. For governance again I had referred Vision IAS value addition material. For international relation I had referred the Vision IAS Mains 365 as well as Forum IAS notes by Dipen sir. Specifically for international relations I had referred his notes, I had borrowed for my friends and I had referred his notes in this regard. Now coming to paper 3, in paper 3 in economy I had first focused on the previous year questions and secondly on the Telegram channel by Vibhas sir in this regard, where he was posting regular questions in between prelims and mains. For the agricultural section I had referred Vivek Singh sir's book in this regard, and secondly the Vision IAS value addition material. For science and technology I had referred TMH's book Mr. Agrahari in this regard. For my environmental part again I had referred PMF IAS and Mains 365 because environmental questions are highly influenced by the current developments that take place. And then coming to the internal security, I had done initial reading of book by IPS Ashok Singh
the TMH by TMH publisher, and second I had also covered the mains 365 in this regard. Now then for GS4, मैंने अपने GS4 का बेस तैयार करने के लिए I had referred lexicon as well as one PDF by IGNOU in this regard on ethical decision making. Then thereafter I had also read few books like the book Why It Is Difficult to Be Good by Gurcharan Das. So with this set of books, I had somehow developed my base for it, base in terms of from where I could ensure that I will be covering that much and I will be able to write that much, that I will be scoring at least average marks that other candidates are scoring. Now coming to the next part, like if I would have been only doing the average part, I won't have been although I would have been qualified, but I won't have been bestowed with this kind of rank which I have got. तो उसके लिए मैंने क्या किया था, उसके लिए because of my optional subject I had mechanical engineering optional, and because of that I had faced significant challenge in terms of balancing my GS and my optional subject. तो उसके लिए अब मैंने rationalize करा था that now among these subjects, among the GS subjects, now I'll specifically target on 3 papers from GS and focus rest on my optional. So there was a deliberate strategy on my part कि इसके बाद मैं बाकी सब में अपना बेस लेवल ही प्रिपेयर करूँगा and I will give repeated revision of those particular sources that I have mentioned, ताकि मैं उनको बार बार repetition के साथ I am at least securing the average platform in terms of scores. अब इसके बाद for my GS part I identified essay paper, GS2 paper and GS4 paper where I will put up extra efforts. और यहाँ पर मेरा कहीं ना कहीं strategical point पे I was making it clear like if I am average in other subjects and in somehow in 3 or 4 subjects I score above average, say plus 10 or 15 marks in 4 or 5 of them, so I'll be definitely qualifying with a good rank. So this was my orientation regarding it, like why I was specifically targeting these subjects. I'll specifically talk about the additional value addition that I had read for these particular topics. Now with respect to essay, one very good exercise I had done was regarding, I was referring the Yojana's editorial desk articles, the front page article that we have for all the Yojana editions. Now if we even look at the word limit, it goes to around 500 to 6 words easily. And what I had done that I had referred these Yojana sources for the last 10 years. तो वहाँ पे मेरे पास कहीं ना कहीं हर एक टॉपिक पे I was having around 3 to 4 write-ups on this regard, and it was a very enriching content. And why I am specifically targeting, because it's enriching and the author itself is summarizing it for you. And in UPSC also, when you have to write in 1000 to 1200 words, so somehow there also you have to bring about a kind of summary of the topic that you are given to you, right? So that somehow helped me in terms of first how getting with what is the requirement in terms of giving a concise summary, या छोटे में जो एक तरीके से संक्षेप में जो चीज़ें चाहिए होती हैं उसको मुझे समझने में कहीं ना कहीं इसमें हेल्प मिली, और उसके साथ साथ मुझे एक वैल्यू एडिशन के लिए बहुत एनरिचिंग कंटेंट मिला जो एक मैं रेडिली रेफर कर सकता था. नाउ दिस आई विल बी ऑल्सो शेयरिंग विद all the fellow aspirants on my telegram channel as and when I find time in terms of compiling it. इसके बाद मैंने यूज़ करा था the newspapers. When I was reading newspapers and other sources, my major focus when I was reading newspapers was from the aspect of essay paper and ethics paper. And from newspapers, magazines and other sources, even from books, I used to extract certain anecdotes, certain examples, certain quotations जो मैं कहीं ना कहीं अपने essay में यूज़ करने के लिए आगे सोच सकता हूँ. इसके अलावा एक और चीज़ मैंने करी थी कि like I used to refer the summaries for certain books. Like if I come across certain book, if I'm not having time in terms of reading the entire book, because as I was in my job also, so I used to face this challenge in terms of balancing my time. तो वहाँ पर मैं क्या करता था, इन बुक्स की समरीज रेफर करता था, and easily you can get these kind of summaries, 4-minute summary, 8-minute summary. There are dedicated channels in this regard. तो उन समरीज से क्या होता है, you again get the वो संक्षेप में फिर से आपको कंटेंट मिल जाता है जो आप again you can utilize in your essay. So these 3 things I had done. In addition to that, I had also referred Vision IAS value addition material for essays. I found it good enough to again build a base content for me on which I could build up depending on my other sources. And then especially
In between prelims and mains, I found the Rao's essay booklet very helpful in this regard, again from the aspect that they had given certain previous year essay topics in a very summarized way according to the requirement of UPSC. So I had done these around 4 to 5 things differently in my essay in terms of my preparation, जहाँ पर मैं कहीं ना कहीं अपने आप को I wanted to take myself above the average, कहीं ना कहीं मैं 10 या 15 नंबर का एक मार्जिन ले लूँ वहाँ पर फ्रॉम दी अदर कैंडिडेट्स. इसके बाद सेम थिंग नाउ आई वेंट ऑन टू GS2. तो GS2 के लिए सबसे पहले मैंने किया कि आई रेफर्ड बेयर एक्ट. मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से मैंने बेयर एक्ट डाउनलोड किया. आई एक्सट्रैक्टेड द इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स इन दैट रिगार्ड. आई जस्ट रिकॉल्ड ऑल दी पार्ट्स. अगर मैं आर्टिकल भूलता हूँ तो मैं पार्ट्स पे फोकस करके अपना आंसर फ्रेम अप कर लूँगा. देन देयर आफ्टर दैट आई रेफर्ड सेकेंड ARC. सेकेंड ARC का मैंने पूरा रिकमेंडेशंस रेफ़र करा, उनको टॉपिक वाइज मैंने मैप करा. देन आई यूज्ड टू रेफ़र PRS आर्टिकल्स जो लॉ अपडेट्स होती थी. इनफैक्ट देयर प्राइमर्स आर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल इन दिस रिगार्ड. फिर मैंने 3 ईयर एक्शन एजेंडा भी रेफ़र करा फॉर द गवर्नेंस पार्ट. देन for the governance part, I used to refer ministry's report. Like if there is a issue of tribals, I will go and refer their annual report. For the Ministry of Social Justice, I'll refer their annual report, and I'll just scroll through their index and read their executive summary in this regard. क्योंकि GS के एस्पेक्ट से अगेन हमको एक समरी लिखनी है, तो मैंने कहीं ना कहीं इनकी एनुअल जो रिपोर्ट्स थी उनको भी रेफ़र करा. एंड देन कमिंग टू द इंटरनेशनल रिलेशंस पार्ट, मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का अगेन एनुअल समरी रेफ़र करा, सो दैट इट गिव्स मी ए कॉम्प्रिहेंसिव एस्पेक्ट ऑन वेरियस डेवलपमेंट्स व्हाट गवर्नमेंट इज़ फोकसिंग अपॉन. दैट वाज माय मेजर एजेंडा इन दिस रिगार्ड. तो इसके लिए मैंने पिछले 2 साल का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एनुअल रिपोर्ट रेफ़र किया था. तो इसके अलावा मैंने और वैल्यू एडिशन के लिए और कंटेंट मैंने सर्च करा. लाइक आई यूज्ड टू रेफर टू द वेरियस वैल्यू एडिशन मटेरियल दैट वाज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ क्लासेस. आई यूज्ड टू बोरो फ्रॉम माय फ्रेंड्स एंड आई यूज्ड टू क्यूरेट स्पेसिफिक कोटेशंस फ्रॉम इट, स्पेसिफिक कंक्लूजन्स फ्रॉम इट for the entire GS2 paper. So I had done extra efforts in this regard on GS2 paper, and again the idea was same, that I will be again taking myself above average in this. Now coming to GS4. Now again for GS4 in terms of additional reading, I referred second ARC again, the 10th report. I referred each and every recommendation, और उसका static part भी मैंने रेफ़र करा था. इसके अलावा I referred additional sources also. Like additional sources के लिए मैं सबसे पहले I used to rely on Wikipedia and other standard sources. Then I had also watched the lecture series by the Harvard University. In this regard, I found it very helpful in terms of understanding the subject. Then thereafter, I also referred certain journals by Harvard Business School in this regard for the part of leadership and emotional intelligence. Then I focused on in terms of collecting quotations, creating my personal life examples in this regard. So I had worked extra even in my GS4. Although unfortunately in my GS4 I could not reflect that particular thing because I was not able to attempt a 40 marks paper. I had left because of the time management issue I had, but luckily I had about average marks in this regard. तो कहीं ना कहीं मैंने 3 GS पेपर्स और 3 जेनरिक्स पेपर मैंने टारगेट करे थे, where I will be going above the average and I will be somehow differentiating myself vis-a-vis the others. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरी 2 में काम करा, 1 में काम नहीं करा, and that things happens many times. अब इसके बाद the next thing comes is about the optional subject. I will be sharing my experience with an engineering optional in this regard. Personally, I had taken this optional because of I had done a dual degree in the same field, and then I was working in DRDO also, and I had even fortunately cracked the engineering services examination. तो मेरे लिए कहीं ना कहीं ये default choice बना था taking mechanical engineering as an optional subject. But later on, as I told you earlier, I was facing significant challenge in terms of balancing the requirement of this optional, because as such it's vast firstly, and secondly जो इसकी requirement है that requires an objective mindset. Means you have to be very objective, you have to solve numericals, you have to be very particular about it, and again it depends on the examination date, in what state you are there, how many numericals you are able to correctly solve.
और इसके साथ साथ देन यू आर गोइंग फॉर जनरल स्टडीज़ पेपर, तो वहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट अलग हो जाती है विज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। तो उसके रिगार्डिंग आई हैड टू फेस सर्टन चैलेंजेस, एंड इनफैक्ट इन बिटवीन मैंने एक बार सोचा भी था दैट आई विल चेंज माई ऑप्शनल समहाउ, बट देन आई कुड नॉट fructify that particular idea that I had. But I'll again emphasize on this part कि when you are choosing your optional, आप अपना ऑप्शनल बहुत सटीक तरीके से चूज़ करिए, आप बहुत केयरफुल रहिए जब आप अपना ऑप्शनल लेते हैं, because although it's only 2 papers if you talk in terms of your optional, but it is a very significant criteria in terms of your final selection. और जब आप अपना ऑप्शनल सेलेक्ट करते हैं तो टेक केयर, ड्यू कंसिडरेशन अबाउट वेरियस फैक्ट्स, टेक केयर इनटू कंसिडरेशन योर इंटरेस्ट इन दिस फील्ड, कि आपका इंटरेस्ट क्या है उस पर्टिकुलर टॉपिक में, लुक इनटू योर फेमिलियरिटी विद इट, लुक इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखो कई बार ऐसा होता है कि यू माइट बी हैविंग good interest in a particular subject, but from the academic aspect you might not be having the content or the things that are required from the academic aspect. So it's not only about the interest, you should also look at the objective. See, at the end of the day your objective is that you want to score well in the exam in these optional papers. तो आपको उस objective को कहीं ना कहीं नहीं भूलना है कि if you are not able to score in that particular thing, so that will be useless for you from the aspect of the objective that you are having on hand, right? So this will be my one point of sharing कि आप जब अपना optional choose करते हैं तो be very careful and take your optional from the aspect of preparing for the civil services examination, not like me that you are having some forte in terms of other examination and then that only you wanted to somehow extrapolate in this examination. Yes, fortunately I was able to do, but I have seen my other friends facing significant challenge in this regard, and that is a very, I say, frank analysis and introspection also by considering the entire thing. अब मैं आता हूँ in terms of the next part, that is answer writing. Now that was significantly challenging for me because मेरा optional भी ऐसा था कि where I was again rooted in my engineering subjects, कहीं ना कहीं humanities का touch नहीं आ रहा था. I was not going into that mood that I have to be descriptive, I have to put upfront the facts, not only the analysis, right? So this was very challenging for me in my first attempt because I was good in terms of the analyzing the particular topic, but I was not putting into the facts. मैं उसके अंदर factual चीज़ें नहीं डाल रहा था. तो ये मैंने realize करा कि this is the flaw that I was having in my first attempt. तो इसको resolve करने के लिए I had resolved in terms of answer writing. तो मैंने आंसर राइटिंग को ब्रॉडली 2 तरीके से देखा था. वन वॉज व्हेन आई गेव अ थॉट अबाउट इम्प्रूविंग माई आंसर राइटिंग स्किल्स. तो मैंने एक 60 डे प्लानर लिया इसके रिगार्डिंग. आई फॉलोड द TLP phase 2 इन दिस रिगार्ड, और मैंने उस प्लानर को रिलीजियसली फॉलो करा एंड आई राइट डाउन एवरी डे एंड विद अ फीडबैक मैकेनिज्म, ऑफ कोर्स विद माय पीयर ग्रुप. तो मैं उसको रेगुलरली लिखता था और उन 60 दिनों के अंतराल में मुझे एक तरीके से सारा एक समझ आ गई कि व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट. बिकॉज मैं जब हर दिन वो 5 सवाल लिखता था and those were quality questions. It was not like that they have picked up any article and that they are just giving for the sake of giving the questions. तो quality questions होते थे which was even reflecting the standards of UPSC. तो कहीं ना कहीं अगर जब हम 5 सवाल दिन के डिस्कस करते थे तो कहीं ना कहीं हमें समझ आती थी कि यार इस पर्टिकुलर टॉपिक की ये रिक्वायरमेंट होती है. तो उसके अकॉर्डिंग वी स्टार्टेड क्यूरेटिंग आवरसेल्फ. फिर इसके बाद आई इवन अटेम्प्टेड सम ऑफ द फुल टेस्ट. I had not joined any of the test series in this regard. I attempted on my own and then my friends again checked it for me. So this was my strategy regarding answer writing. Now lastly I like to emphasize on note making, right? Lastly I like to emphasize on note making from the aspect of the requirement that we are having in the paper, right? If I briefly अगर मैं पूरी प्रोसेस को समराइज करना चाहूँ, in the entire process, in terms of the process on the part of the aspirant, हम इसमें रीडिंग कर रहे हैं, then when we are going for the examination, हम उसको रिकॉल करेंगे और एक ऐसे फॉर्मेट में रिप्रोड्यूस करेंगे which is acceptable for the examiner. तो कहीं ना कहीं the entire process, if I summarize, it is all about reading, recalling and reproducing according the requirement of the question or the examiner in terms of presentation also. तो इसके लिए बहुत important हो जाता है that you summarize everything or you consolidate everything that you are reading. क्योंकि कहीं ना कहीं पढ़ने के लिए आप काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे और वहाँ पर आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको उसको समराइज़ करना है 1 पेज में या 2 पेज में. तो इसके लिए आपका नोट मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. And in this note making, I did a very good thing, especially in my last 1 to 2 months
before the mains, I started making kind of primers in the sense मैंने हर एक टॉपिक पे I picked up every GS टॉपिक और उस हर एक GS टॉपिक पे I made a kind of primer कि मैं 2 या 3 पेज की एक समरी शीट बनाता था, where my intention was कि मैं उसके अंदर जो अलग अलग डायमेंशंस है उस टॉपिक के ऊपर I'll bring those dimensions into that particular sheet or the piece of paper that I was having. And many times I used to use different techniques in this regard, but two things ग्रेटली हेल्प, दो चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं इसके रिगार्डिंग. एक होता है आप उसमें जब स्केमेटिक्स बनाते हो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है, साथ के साथ अगर आप कीवर्ड्स यूज़ करते हैं उनमें तो भी आपको काफ़ी हेल्पफुल होता है चीज़ों को समराइज करने में. सो दिस इज़ ऑन द पार्ट ऑफ एम्फसाइजिंग ऑन द एस्पेक्ट ऑफ नोट मेकिंग एंड रिवाइजिंग इट. सी अगेन फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ रिवाइजिंग यू आर प्रिपेयरिंग इट एंड देन यू आर प्लानिंग अबाउट इट एंड देन यू हैव टू जस्ट प्रिस्पायर ऑन इट कि जो आपने प्रिपेयर करा, जो प्लान करा है उसके ऊपर आपको फंक्शन करना है. तो उसके लिए आपके रिविजन्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. आई विल मेक अ कन्फेशन इन दिस रिगार्ड कि आई वॉज नॉट गुड, स्पेशली इन माई फर्स्ट 2 attempts I was not very good in revising whatever I was reading. In this attempt also, like, I was not that particular about revision, but somehow I was able to somehow do that much revision कि it did not suffer in terms of the final selection. तो रिविजन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिविजन व्हेन यू आर गोइंग फॉर मल्टीपल रिविजन्स यू मेक अ काइंड ऑफ मेंटल स्कीमा जिसको आप रिप्रोड्यूस कर पाएंगे बार बार, और वहाँ पर आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. वहाँ पर मेरे को टाइम मैनेजमेंट के एस्पेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखते हैं, क्योंकि अगर आप रिवाइज करते हैं, आप कंसोलिडेट करते हैं, बार बार करते हैं, तो आपको रिकॉल करने में आपका प्रोसेसिंग टाइम कम होता है एंड देन यू आर एबल टू प्रोसीड फर्दर. सो दिस वाज माई स्ट्रेटेजी with respect to civil services, and briefly I will summarize my strategy in terms of that my intention was that first I'll secure my base. पहले मैं एक अपना बेस सिक्योर करूँगा जहाँ पे मैं एटलीस्ट कोई एक पेपर ना छोड़ूँ जिसके कारण आई विल बी लैगिंग समवेयर और आई विल बी लीविंग अ वीक मसल. और इसके बाद in the next stage I focused in terms of bridging myself in terms of preparing 3 subjects for the GS and 1 of my optional paper, जहाँ से मेरी स्ट्रेटेजी ये हो गई थी कि in terms of from the 7 papers that I am having, I'll be focusing on 3 to 4 papers जहाँ पर मुझे excel करना है, और बाकियों में that I have to compete, I have to just at the level that I am able to run the race that the others are also running. So ये मेरा brief था, and for me balancing became very important. The optional papers requirement and GS paper. So these 2 things I think will summarize my strategy in terms of this time, and maybe I was able to implement it so that I was bestowed with such a good rank. So thank you on my part, and I was very blessed to be interacting with you on this platform.